Hello, how are you, students? So, today we start a new topic, and the topic is oxidative phosphorylation, or you can also call it as electron transfer system. But it is made up of two different terms. First is electron transfer system, and the second is oxidative phosphorylation or and ETS, electron transfer system. Okay, now if you rewind your memory and just recall 13th chapter कि you just learn the chemiosmotic hypothesis, and it is because of different concentration gradient between inner matrix or inner membrane, or sorry, membrane lumen of thylakoid and matrix of chloroplast, or you can say grana of जो ग्रेना के स्ट्रोमा था, सॉरी, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड, उसके बीच में जो हाइड्रोजन या यू कैन से प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फॉर्म हुआ था, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट इन PS1 एंड PS2. समवॉट लाइक दैट कि जो सेम थिंग इन द क्लोरोप्लास्ट था, वही सेम थिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया है. Now, as you know कि glucose, we start a glucose breakdown and the formation of pyruvic acid. Then this pyruvic acid is moved, or rather traveled inward into the mitochondrial membrane, mitochondrial matrix, and the Krebs cycle occurs in the mitochondrial matrix. Now, after the Krebs cycle, the different products are produced like NADH plus H plus, which is 4 molecules, then FADH2, which is 1 molecule, and 1 ATP after the completion of single Krebs cycle. And as you know कि pyruvic acids are 2 molecules. That's why the Krebs cycle वो जो होता है वो it is of 2 type. That's why the 8 molecule of NADH plus H plus, the 2 molecule of FADH2 and 2 ATPs. Okay, now these are the products of Krebs cycle. Now how the ATPs are generated? How? Okay, on who is the responsible for the production of ATP, which is synthesized after the degradation of glucose, because glucose is completely degraded, okay, in the Krebs cycle. So what happened with the NADH2 or FADH2 कि जिससे हमें we can generate the ATP. So it's called electron transfer system. So जो NADH plus H plus है, it is degraded and it releases the 2H plus molecule, and and they also release the 2 electrons rather, and the starting of electron transfer system into the mitochondrial inner membrane. As you know कि mitochondria is made up of 2 membranes, or the Christie is made up of 2 membranes. First the outer membrane and second is inner membrane. So between these 2 membranes there is a inner membrane space. Okay, now in the chloroplast there is the hydrogen concentration gradient, or you can say proton concentration gradient, जो lumen of thylakoid के अंदर increase होता था, same as यहाँ पे जो inter membrane space है between the 2 membrane of mitochondria की 2 membrane जो है उसके बीच में जो inter membrane space है, वहाँ पे hydrogen concentration increase होता है with the help of this ETS. जैसे ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड के अंदर हाइड्रोजन इंक्रीज होता था विद द हेल्प ऑफ PS1 और PS2 के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, सेम एज यहाँ पे ETS की वजह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वहां पे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, और ये प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन जैसे इंक्रीज होगा, एज यू नो कि प्रोटॉन ट्रांसफर या प्रोटॉन gradient एक फॉर्म होगा, and due to this proton gradient the proton is traveled, or you can say proton motion force, it's called proton motion force कि यहाँ पे प्रोटॉन है वो मूव करेंगे फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो जैसे ही प्रोटॉन मूव करेंगे, you know कि in the inner membrane there is the ATP synthase is there, and ATP synthase है वो when this proton is traveled through this ATPase enzyme, automatically the ATP is generated. Okay, ये आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में पता है, फिर से मैं रिपीट कर दिया मैंने पूरा. तो
अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस. एज यू नो कि membranes are made up of lipid and protein. So there are proteins proteins are present in the internal membrane or inner membrane of mitochondria. So inner membrane है या फिर inner membrane of mitochondria, उसके ऊपर there are so many proteins. Now these proteins make a complex structure because this complex are made up of different subunits of protein. Okay, so these complex are present in the membrane. Okay, here I have already done the diagram of membrane. So this is the membrane. Okay, this is the whole membrane, and I use the different color. I use different color for the different complex. Okay, so here you can easily see that there are first, second, third, fourth, and fifth. 5 complexes are there. Okay, 5 complex है in the inner membrane of mitochondria. Now the first complex is made up of different things, second is made up of different things, and between this complex which are present in mitochondrial membrane पे जो ये complex present है, उनके बीच में भी there are few electron carriers, you can say hydrogen carriers also. You can also say that they are hydrogen carriers. So hydrogen acceptors or hydrogen carriers, they are also present in the between this complex also. वो हम देखेंगे कि वो क्या है. So the complex also उसके बीच में ये present है. Now ये पूरा ETS complete होता है at the 4th complex. फिर से बोल रहा हूँ, ETS electron transfer system जो complete होता है at the 4th complex. The 5th complex is ATPase, which is used in synthesis of ATP. That's why if we consider the 5th complex in this system, you can call oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation आप कब कह सकते हैं? When you consider this 5th ATP synthase complex into this chain, it's called oxidative phosphorylation. If you remove this 5th complex, it's just the electron transfer system. Okay, it's just an electron transfer system. Clear? So now first of all we start with the first complex कि क्या कैसे पूरा इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर करता है. That's why it's called electron transfer system. So where the electron is released, or rather कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होता है? It released from NADH plus H plus with the help of first complex. The complex first is NADH dehydrogenase. So the first complex name is NADH dehydrogenase. Now this complex is made up of flavin mononucleotide FMN. This is the first complex, and this is the subunit of this complex, or you can say इस complex को ये नाम दिया जाता है NADH dehydrogenase. Okay, NADH dehydrogenase, and this complex is made up of FMN, flavin mononucleotide. Okay, there are few metal ions are also present in this complex, but वो slowly हम देखेंगे. So जैसे ही NADH plus H plus inner membrane तरफ आता है, they release the 2H plus molecule which are directly goes to the when they travel to complex 1, they automatically goes to the inner membrane space. So hydrogen वहाँ पे move हो जाता है. The 2 electrons और NADH plus H plus है वो NAD plus में convert होता है with the release of 2 electrons. So यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं which travels from FMN flavin mononucleotide to FES complex, iron sulfur complex है. So iron sulfur complex, you can easily also say that it is passed through as complex 1. Now वो complex 1 से pass होके आते हैं ubiquinon. UQ means ubiquinon. Okay, you can also say that it is quinon. Okay, now they accept this electron. Mind it, ubiquinon is not a part of complex 1. It's situated between the complex 1 and complex 2. So this is the complex 2, this is the complex 1, and it is present between these 2 complexes. Okay, now so this electron is received by ubiquinon
यूबिक्विनॉन है वो सेमी यूबिक्विनॉन बनता है विद द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो थोड़ा एक्टिवेट और एक्सेलरेट हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, एंड देन दे रिसीव द हाइड्रोजन फ्रॉम मैट्रिक्स से वो हाइड्रोजन को रिसीव करके दे कन्वर्ट इट इनटू यूबिक्विनॉन H2, UQH2. So the ubiquinone receive the electrons and then hydrogen from matrix and they form a ubiquinone UQH2. Now they release this 2H plus into the inner membrane space and they also release the electron to the complex 3. Okay, so this electron move to complex 3. Now complex 3 is named as cytochrome BC1. Now you just curious, sir, why you didn't you do not say the succinate dehydrogenase, or what about succinate dehydrogenase? I forgot, I don't know, मैंने ये जानबूझ के नहीं लिया कि सर succinate dehydrogenase, because when we complete, first of all we complete the whole electron transfer system, then we talk about the F2 or rather complex 2. Why? I will explain you. Okay, so so in the NADH2 means NADH2 से जो भी electrons release हुए हैं वो complex 1 से ubiquinone और ubiquinone से direct complex 3 में आते हैं. Now here I also mentioned that कि in your textbook, if you see your textbook, it is different. Why? Because ये chain perfect है आपकी textbook में कि 1 ubiquinone and 3 from NDH2, और आपको ये second complex दिया गया है after the third complex, which is not correct. वो correct नहीं है, manner correct नहीं है, but अभी textbook में दिया गया है for your explanation. Okay, आपकी understanding के लिए. So अभी मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, then you read your textbook and the second complex हम लेंगे बाद में. So see the complete video. Okay, पूरा वीडियो completely देख ले शांति से. Now फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ से रिलीज हुए 2 electrons which travel from FMN to FES, iron sulfur complex, then ubiquinone H2 फॉर्म करता है, वो हाइड्रोजन निकलते हैं, एंड देन इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 3 में आता है डायरेक्ट फ्रॉम यूबिक्विनॉन. सो कॉम्प्लेक्स 3 में वो ट्रैवल करता है फ्रॉम साइटोक्रोम B, देन फिर से आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स, देन साइटोक्रोम C1. सो द सीक्वेंस इज कि साइटोक्रोम B, देन आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स, देन साइटोक्रोम C1, और साइटोक्रोम C से होता है साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में. नाउ here the cytochrome C is also not a part of complex 3. It is separate. So cytochrome C है वो separate है cytochrome 3 और 4 के बीच में. Okay, then cytochrome C से वो आता है complex 4. The complex 4 is cytochrome C oxidase. Cytochrome C oxidase, this is the 4th complex. Now यहाँ से वो travel करता है इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन मेटल आयन से होके साइटोक्रोम A3 एंड फिर से आयन जो है आयन कॉपर सल्फर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कॉपर सल्फर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स है. ये डिफरेंस है 4th कॉम्प्लेक्स में जो आपको याद रखना है. सो यहाँ पे कॉपर सल्फर कॉम्प्लेक्स है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है ऑक्सीजन. ओके, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन and they use the 2H plus molecule and oxygen 1/2 O2 means a single molecule of oxygen, not a 2H O2 नहीं, 1/2 O2 means वो होता है O2 के फॉर्म में, but they will separate it and they use 4H plus and form H2O of 2 molecule of H2O means वो दो मोलेक्यूल, लेकिन हम अभी सिर्फ एक ही बना रहे हैं. that's why we take a 1/2 O2 plus 2H plus जो मैट्रिक्स में है, and then the electron which are arriving from transfer system and we form a H2O. Okay, now this is the whole complete electron transfer system. Okay, not oxidative phosphorylation, this is the whole electron transfer system. So in this system which are the complexes are there? Complex 1 FMN ion sulfur complex, then ubiquinone.
then ubiquinone से cytochrome B, cytochrome C1, then cytochrome C means complex 2 to cytochrome C, cytochrome C2, cytochrome A, cytochrome C, sorry, A3, okay, and then H2, okay. Now sir, what about second complex? Okay, the second complex is succinate dehydrogenase. It is the second complex. Now during this reaction succinate to fumaric acid, जब succinate acid से fumaric acid बनता है, so if you remember the Krebs cycle, वहां पे रिलीज होता है FADH2 means 2H plus रिमूव होता है, वो H plus FAD के साथ ज्वाइन होके FADH2 फॉर्म करता है, वो FADH2 यहाँ पे डिग्रेड होता है dehydrogenase, succinate dehydrogenase. so वहां पे जो 2H plus रिमूव होता है FADH2 से, means you can also write this कि FADH2 releases FAD and this 2H plus वो यहाँ पर आते हैं, ओके, 2H plus यहाँ से रिमूव होते हैं, देन जो इलेक्ट्रॉन है वो आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाता है यूबिक्विनोन के पास. Now ubiquinone also receive the electron from complex 1 and also receive the electron from complex 2. मीन्स यूबिक्विनोन ऐसा मॉलिक्यूल है जो कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, एंड दे रिलीज ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इंटरवली. ओके, सो यूबिक्विनोन ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों के बीच में है. दैट्स व्हाई आई एम कि आपकी बुक में वो पीछे दिया गया है. अब आपकी बुक में क्या है कि रेड लाइन एक नीचे से ऊपर आई है, एक रेड लाइन ऊपर से नीचे आई है, और दोनों मिक्स होके यहाँ पे 4H plus रिमूव हुए हैं. That's why I am drawing this F2, sorry rather second complex into the its correct manner. मैंने इसकी correct manner में इसको draw किया है, आपकी टेक्स्ट बुक में नीचे है. समझ में आया? Because why? कि यहाँ से complex 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो भी यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करता है, और complex 1 से जो आता है वो भी यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करता है. So now the rest of the channels are same. एक यहाँ पे डिफरेंस है कि FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उससे यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिमूव होता है वो एक हाइड्रोजन कम होता है. एक मीन्स जो एक साथ हाइड्रोजन रिमूव होता है उससे थोड़ा कम रिमूव होता है. यहाँ पे 2 जगह पे हाइड्रोजन रिमूव होता है, एंड इफ द NADH2 रिलीज द इलेक्ट्रॉन देन 1, 2 and 3 3 जगह पे हाइड्रोजन रिलीज होता है 3 times. ओके, बट व्हेन it start from the complex 2, then only 2 places कि जहां पे हाइड्रोजन है रिलीज होता है. now this hydrogens are accumulate into the intermembrane space. वो intermembrane space पे accumulate होते हैं. okay, now क्या होता है, the fifth complex is there कि जैसे ही fifth complex के अंदर से 2H plus passes through this ATP synthase जो F0 F1 molecule है, which is similar as in 13th chapter की ATPase, जिसका 2 पार्ट है, F0 which is present in membrane, F1 it is outside of membrane into the matrix side. उसमें स्ट्रोमा की साइड था. yes, so F1, और जैसे ही 2H plus इसमें पास होंगे the 1 ATP is synthesized. ओके, सो यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि 2H plus 2H plus 2H plus. so if the NADH2 is dehydrogenase होता है उसका, और NADH dehydrogenase से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वहां से 6H plus या फिर H plus 3 जगह से H plus पास होते हैं, 1, 2, 3, तो 3 जगह से 2H plus पास होंगे तो 3 ATP जनरेट होंगे. और FADH2 का देखें तो FADH2 से 1 and 2 ही H plus पास होंगे 2 जगह से. सो 2 जगह से ATP पास होंगे तो 2 molecule of ATP synthesize होगा with the help of passing of this passing of this proton. जैसे ही 2 protons are passing through the ATP synthase or ATPase you can say, so 1 molecule of ATP is synthesized. okay, so if the फिर से बोल रहा हूँ, if the NADH plus H plus dehydrogenase या NADH dehydrogenase होता है और इलेक्ट्रॉन पास होता है
1 2 and 3 जगह से H प्लस रिमूव होता है, दैट्स व्हाई व्हेन दे पासेस थ्रू द ATPase 3 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं और दो जगह से जो H प्लस रिमूव हुए वो H प्लस यहाँ से पास होंगे, तो यू कैन ऑल्सो से कि देयर आर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। सो मैं कह सकता हूँ कि NADH2 से मुझे मिलते हैं 3 ATP और FADH2 से मुझे मिलते हैं 2 ATPs। ओके, क्लियर। सो नाउ इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे कि कितने NADH2 यहाँ पे टोटल या कितनी ETS हुई। एक FADH2 होगा तो एक ETS, या एक NADH2 होगा तो एक ETS। हमारे पास 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 है आफ्टर दी 2 Krebs cycles of 1 molecule। ओके, सो उसकी जो बैलेंस शीट 8 into 3 means 24 molecule of ATP synthesized into the after the complete ETS of whole Krebs cycle। Krebs cycle से जितने भी NADH2 मिले 8 वो ETS से पास होके हमको मिलेंगे the 24 ATP। सो उसकी बैलेंस शीट हम बाद में बनाएंगे, बट दिस इज the ETS, electron transfer system, and oxidative phosphorylation. This is the oxidative phosphorylation. Why? Because oxygen is there and ATP is there. So ATP हमें यहाँ पे मिलती है and oxygen भी मिलता है। Okay, so this is the whole ETS and oxidative phosphorylation. So फिर से बोल रहा हूँ, NADH2 से 3 molecule of ATP, FADH2 से 2 molecule of ATP। ओके, सो यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ATP की कैलकुलेशन जो हम करेंगे आफ्टर द होल कंप्लीशन ऑफ ग्लूकोज, ओके, वो कैसे होंगी उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो आज यहाँ तक रखता हूँ। ओके, बाय।